Today we studied about the fundamentals of remote sensing, Unit 1, Lecture number 2. Principle of remote sensing. The basic principle lies in mapping the Earth's surface features by reflected electromagnetic energy, which is different for different objects, is measured by sensors on remote platform, that is satellite. Figure shows the basic principle of remote sensing. Now consider if the energy being remotely sensed comes from the sun. The energy is radiated by the atomic particles at the source, the sun, and propagates through the vacuum of the space at the speed of light, interacts with the earth atmosphere, interacts with the earth's surface. Some amount of energy reflects back, interacts with the earth atmosphere once again, and finally reaches the remote sensor which are mounted on the satellite. Here, as shown in figure, from sun the electromagnetic energy is एमिटिंग और जो भी सन से जो भी एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ओके, वो किस पार्ट पे पड़ती है? ग्राउंड, जो भी अर्थ की सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है. ओके, रोड ले लो आप, देन बिल्डिंग्स ले लो, ग्रास ले लो, वाटर ले लो, फॉरेस्ट ले लो. ओके, तो वो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनर्जी है वो किस में जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी. एटमॉस्फेयर में से वो कहाँ पे जाएगी? ये सब बिल्टअप एरिया है, पेव्ड रोड है, जो भी डिफरेंट अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स है उस पे प्रोपोगेट होगी, पसार उस पे पड़ेगी, उस पे एमिट होगी. ओके, देन some amount of energy is absorbed by the object, and then it transmits or it reflects back to the atmosphere, and from the atmosphere it reaches to the satellite. Okay, satellite sensors. Okay, and from this we take the data. If the energy being remotely sensed comes from the sun, the energy is radiated by the atomic particles at the source, that propagates through the vacuum of space at the speed of light, interacts with the earth atmosphere, interacts with the earth spaces, some amount of energy reflects back, interacts with the earth atmosphere once again, and finally reaches the remote sensors which are mounted on the satellite. The following 7 elements that comprise the most common remote sensing process from the beginning to end is illustrated in figure. First one is the energy source. The first requirement for the remote sensing is to have an energy source that illuminates or radiates the electromagnetic energy to the target of the interest. First आपके पास energy source होना चाहिए. The first requirement for the remote sensing is to have an energy source that illuminates or radiates electromagnetic energy to the target of the interest. That means हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से वो एनर्जी हम एमिट कर सके. ओके, द पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम रिलाइज on the sun as the strongest source of electromagnetic energy and measures energy that is either reflected or emitted from the earth's surface features. पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? जो भी सन है वो ही एनर्जी सोर्स है जिसमें से क्या होता है? एनर्जी निकलती है. ओके, एमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बराबर. It is either reflected
measures that is either reflected or and emitted from the earth surface features. ओके, एक सोर्स है, जो भी अर्थ सन है वो एक सोर्स है जिसपे से हम क्या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के स्वरूप में हम ले सकते हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, वहाँ से एनर्जी होती है वो जो भी अर्थ सरफेसेस है वहाँ पे एमिट होती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होती है। ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम डेटा लेते हैं। Okay, that is called passive remote sensing. However, active remote sensing uses their own source of electromagnetic energy. Active remote sensing में आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल जो भी एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या है, अपना कई बार सेंसर्स कई प्रकार के होते हैं। सेंसर जो होते हैं कई बार सेंसर के पास वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके खुद एमिट करता है, उसकी एनर्जी से वो जो भी अर्थ सरफेस पे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी एमिट होती है और वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है और वो डेटा कैप्चर करते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैमरा, तो उसमें फ्लैश लाइट होती है। तो फ्लैश लाइट में अभी कैमरा की बात करें तो सुबह में क्या है, फ्लैश लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो दोनों का एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक्टिव और पैसिव। ओके, तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या है, तो कैमरा को एक्टिव और पैसिव दोनों बोल सकते हैं। कैसे? बिकॉज सुबह में हम जब भी कोई भी फोटोग्राफ कैमरा से लेते हैं तो फ्लैश लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, वो नेचुरल सोर्स जो भी है सन, ओके, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आती है वो उसका यूज़ करके हम इमेज अंदर फोटोग्राफ जो भी फोटोग्राफ है वो कैप्चर होता है। जबकि कई बार रात को हमें फ़ोटो खींचना है तो वो अपनी जो भी फ्लैश लाइट है वो यूज़ करेगा और जो भी फोटोग्राफ है वो कैप्चर करेगा। ओके, तो वो दोनों का एग्जांपल हम ले सकते हैं कैमरा को, एक्टिव और पैसिव। ओके, सन है, सन रेज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज गिरता है, कई थोड़ा जो भी है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज absorbed by the object or any surface and some electromagnetic energy is reflected back। तो जब भी वो रिफ्लेक्ट होती है तभी जो भी सैटेलाइट का सेंसर होता है वो क्या करेगा, वो जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो सिग्नल रिसीव करेगा, वहाँ से कोई इमेज बनेगी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी और वो इमेज कौन कैप्चर करेगा, तो यहाँ पे एक स्टेशन होता है। ओके, तो ये स्टेशन ई है, वो इमेज कैप्चर करेगा और बाद में यहाँ पे एनालिसिस वगैरह होगा। ओके, GF, ओके, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। Interaction of energy with the atmosphere. As the electromagnetic energy travels from its source to the target, it will come in contact with and interacts with the atmosphere on its way to the Earth's surface. Also, after reflection of the Earth's surface, it again passes through the atmosphere on its way to the sensor. When the energy source is the sun, then first of all energy comes through the vacuum where no interaction happens before interacting with the Earth's surface. The atmosphere modifies the wavelength and spectral distribution of the energy to some extent, and this modification varies particularly with the wavelength. Interaction of the energy, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब भी एनर्जी सोर्स होता है वहाँ से जो जब भी निकलती है तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है। ओके, एटमॉस्फेयर में जाके जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे एमिट होती है। ओके, और वापस अगेन कई एनर्जी वो एब्जॉर्ब होती है। ओके,
और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमोसफियर में जाती है। ओके, देन जो भी सेंसर्स होता है उस तक एटमोसफियर में जाके वो सेंसर जो भी होता है उस तक पहुंचती है। ओके, जब भी बट सन की बात करें तो सन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कम्स थ्रू द वैक्यूम में से एनर्जी आएगी। देन नो इंटरेक्शन हैपन्स बिफोर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ सरफेस, बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, जब तक वो अर्थ एटमोसफियर तक पहुंचती है तब तक बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। एंड द एटमोसफियर मॉडिफाइज द वेवलेंथ, एटमोसफियर क्या करता है, उसका वेवलेंथ है वो मॉडिफाई करता है। एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी टू सम एक्सटेंट, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सम अमाउंट उसमें चेंज करता है, उसका सम अमाउंट चेंज करता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड दिस मॉडिफिकेशन वेरीज पार्शियली विद द वेवलेंथ। ओके, ये मॉडिफिकेशन है, दिस मॉडिफिकेशन वेरीज पर्टिकुलरली विद द वेवलेंथ है वो पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन किस में करेगा, वेवलेंथ में, विद वेवलेंथ के साथ करेगा। ओके, interaction of the energy with the target. Once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both the target and ion radiance. Okay, the interaction of electromagnetic energy with the earth's surface features generates reflected and emitted signals. Okay, interaction of the electromagnetic energy with the earth surface features generates reflected emitted signals. Okay, spectral response patterns or signatures. The spectral response patterns play a central role in the detection, identification and analysis of the earth surface features. As the reflected energy travels from its target to sensing or imaging devices, it interacts with the atmosphere once again. Okay, interaction of the energy with the target, वो क्या है, एनर्जी जो भी है वो टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है और वापस कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। Once the energy makes its way to target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both the target and the ion radiation. The interaction of electromagnetic energy with the earth's surface features generates reflected and emitted signals. Generates the reflected or emitted signals. क्या करती है, जो भी जब भी वो अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्शन करती है तब भी वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न और सिग्नेचर्स। The spectral responses patterns play a central role in the detection, identification and analysis of the earth surface features. जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सेस है, पैटर्न्स है, उसका यूज़ किस में होता है, तो उसका डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर्स में यूज़ होता है। एज रिफ्लेक्टेड एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम इट्स टारगेट टू द सेंसिंग और इमेजिंग डिवाइसेस, as the reflected or emitted energy travels from its target to the sensing or imaging devices, it interacts with the atmosphere once again. Okay, that means जब भी वो कोई भी टारगेट है, फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस है, उसके ऑब्जेक्ट्स पे वो एमिट हुआ, ओके, फिर बाद में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द टारगेट। Recording of the energy by the sensors. After the energy has been reflected by the emitted from the target, we require sensors, that is remote, not in contact with the target, to record the EMR, that is called electromagnetic radiation. Sensors are mounted on the satellites. सेंसर कहाँ पे रखा होता है, कहाँ पे होता है, तो सैटेलाइट सेंसर्स कहाँ पे प्रोवाइड किया होता है, तो सैटेलाइट पे प्रोवाइड किया होता है।
They are highly sensitive to wavelengths, yielding data on the absolute brightness from the object as a function of the wavelength. Next one is transmission, reception and processing. The energy recorded by the sensor has been transmitted, often in electronic form, to a receiving or processing station on the ground, where the data are processed into an images. Okay. The energy recorded by the sensor has to be transmitted, often in electronic form, to a receiving and processing station on the ground, where the data are processed into an image. That means क्या होता है, सेंसर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी जो भी कोई भी डेटा आता है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, उसको रिसीव करता है, देन प्रोसेसिंग वो सेंसर में होता है, ओके, और डेटा के फॉर्म में डेटा जो भी मिलता है वो इमेज के फॉर्म में मिलता है, ओके. देन नेक्स्ट, the real-time data handling system consists of high-density data storage devices for recording and visual devices for quick look display. The data products are mainly classified into two categories: pictorial or photographic product and the digital product. Next, interpretation and analysis. The processed images from the sensors is interpreted visually or horizontally or electronically to extract the information about the target of the interest. The data analysis process involves examining the data using the various viewing instruments to analyze the pictorial data, okay, which is called the visual image interpretation techniques. जो भी डेटा है वो उस पर क्या होगा, डेटा एनालिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स. अब बाद में क्या होगा, डेटा एनालिसिस प्रोसेस होगा एग्जामिनिंग द डेटा यूजिंग द वेरियस व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द पिक्चरल डेटा विच इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज इंटरप्रिटेशन. दैट मीन्स जो भी इमेज आई उसको क्या करेगा, वो इंटरप्रिटेशन करेगा, ओके, एनालाइज करेगा, ओके. यूज ऑफ द कंप्यूटर्स टू एनालाइज द डिजिटल डेटा थ्रू ए प्रोसेस इज नोन एज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स. द एनालिसिस ऑफ ए डेटा यूटिलाइजिंग द visual image interpretation involves the use of fundamental picture elements, namely tones, textures, patterns, size, shape, in order to detect and identify the various objects. जब भी कोई भी डेटा इमेज के फॉर्म में हम इंटरप्रेट करते हैं तो यूज़ ऑफ फंडामेंटल पिक्चर्स, हम फंडामेंटल पिक्चर्स निकालते हैं, नेमली टर्न, texture, pattern, size, shape, in order to detect and identify the various objects. Application. Finally, we apply the information about the target of the interest to prepare the maps. The set of data becomes various forms of maps for different users. The set of data becomes various forms of maps for different users with understanding of their fields, interpretation, etc. Hopefully, the people can use the information to make the improved energy and management decision. Okay. अभी हम नेक्स्ट एक वीडियो देखते हैं, उस पे से आपको पता चलेगा कंपोनेंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है रिमोट सेंसिंग में. ओके. Well, after covering the definition, let's look at the process of remote sensing. Since we have to get information about some object, that object will need to be illuminated, or you should be able to see the object. Let's try and understand in very simple terms how even now what's happening. The camera is recording me.
That's in a way remote sensing, or rather that is exactly remote sensing. But the camera can detect me or is filming me only because there is sufficient enough illumination by these two spotlights which are here in the studio. Imagine a situation where suddenly the power fails, there is no light. Well, the camera is on, but it will not be able to detect me. You can see me now. So the primary need for any remote sensing is a source of illumination. Conventionally, illumination would be only in the visible spectra. That means light the way we humans understand it, or the way our eyes perceive light. But remote sensing is also done in other wavelengths, like in the infrared, also in the radar region, in the thermal infrared. So let's understand the process. The first step is you need illumination. In our case, the primary illumination all around comes from the sun. So you have sun's energy transmitting through space, coming through the atmospheric layers of the earth, falling on the earth's surface. As it transmits to the earth, there are some wavelengths which get absorbed, some just don't come through. The light falls on the earth's surface, interacts with it. Now the term interact means a lot. Every object on the earth's surface has its own intrinsic properties of absorbing and reflecting sunlight. So as the light falls, it interacts. Whatever is reflected from the object, and some of it also radiated from the object, transmits again back through the Earth's atmosphere and would be detected by a sensor. The sensor can be on board the satellites which we have launched. It can be on a sensor which is on an aircraft, and today very popularly it could also be on drones. So that's the first step, that's detection. You have recorded the signal. The next step is, whatever data you have collected is either downloaded or transmitted to a earth station or a processing center, where in very rather mathematical ways corrections need to be done. So these primary corrections are done by the organizations which own these satellites, which could be government or which could be the private sector. It's only after these preliminary corrections that the digital data, or even in print form, is made available to users like you and me. And it is users like you and me who, using the domain knowledge which we have, that we interpret the imagery. So, well, I'm a geologist, I'll interpret it primarily for understanding the rocks, understanding the rock structure. You could be an agricultural scientist. You can use the same data for finding out areas in a farmland which are right now having standing crop. You can use it for finding areas which are about to be infected by a specific fungus or a specific disease. The same data again, exactly the same imagery, could be used by a town planner if tomorrow the same area is going to have urban development. So the applications are tremendous. It's only left to the imagination and ideas which you have. Thank you.